The other two panelists are not present at the moment. Now I call Professor Dr. Aziz Rehman. He is a professor of medicine in Allama Iqbal Medical College. He is the best graduate in 1981, Senior Vice President of Pakistan Society of Internal Medicine, Editor-in-Chief of Journal of Pakistan Society of Internal Medicine. He has a YouTube channel with the name of Mediastinum, where he has so many recorded YouTubes. Now I call Dr. Professor Azizur Rahman for his lecture. Now the other panelist, Dr. Fazil, please come on the stage. Bismillah ar-Rahman Rahim. I think the presentation of today is very important for not only for family physician, for public also. Secondly, the presenter here, Professor Azizur Rehman, he is the best graduate of Allama Iqbal Medical College. He remained professor of medicine at SIMS, Allama Iqbal Medical College, King Edward Medical University, and now at Rashid Latif Medical College. You see, he's running a channel, Medistand. Basically, he has uploaded a lot of internal medicine lectures. And I think the family physician must visit that channel, and they must subscribe to that channel, because there are a lot of videos which are very important, very intelligently uploaded. And I think if you go through those videos, you cannot see any hurdle in seeing even difficult cases. So I think we have a living legend, two living legends, Professor Javed Akram, who is the president of PSIM, Pakistan Society of Internal Medicine, Vice Chancellor, University of Health Sciences, and Dr. Zahir, Professor Zahir Akhtar, who is also a very loving speaker for the family physician, and one of our colleagues who deals with male health, Dr. Fazal Chaudhry. So I'll request now Professor Azizur Rehman, and you see how you will see how he teach you, because I am his student and I know his way of teaching, and he is a very popular, he was very popular teacher among all the students of Allama Iqbal Medical College, and till now he is a very popular teacher, Professor Azizur Rehman. Thank you for very kind and generous introduction. How much time do we have? Let's do it. I'll request Professor Javed Akram Saab, Vice Chancellor, University of Health Sciences, and Professor Aftab Mohsen Saab. ठीक है सर, ठीक। एक सर एक तस्वीर हो जाए, फिर आप नीचे आ जाए। आफ्ताब मोहसिन साहब। सेंटर पे आएगा? नहीं प्लीज। लाइट कम कर दे। इसको एडवांस करने वाला है, कंप्यूटर से करना है।
laser pointer है? Laser pointer? चलो ठीक है. Okay. Thank you very much, everyone, for joining. And when I was approached to deliver a talk on this topic, I was a little nervous because I have never talked on this topic earlier. But when I took the challenge and started preparing it, and I started liking it and realized that how important this topic is and how poorly diagnosed and poorly addressed this topic is. So good news is, censor ne bakhushi pass kar diya. And still it is rated 18 plus. I warn you for some graphic images. This is the agenda. Possible sexual abnormalities in diabetes. Normal mechanism of erection, because unless we understand the normal mechanism of erection, we would not understand the pathology, and we would not also understand how these medicines work. Then evaluation, how should we approach this case? Of course, history, physical, and labs. And diabetes and erectile dysfunction, their correlation, interaction, and then current guidelines about the treatment of erectile dysfunction. I would also include some other sexual abnormalities regarding men's health, but I think most distressing and most important is perhaps erectile dysfunction. Now, first of all, the possible sexual abnormalities. There could be loss of libido. That means one loses the desire of having sex, which is very abnormal because this is one of the universal pleasures of life. Then erectile dysfunction, previously used to be called impotence, but these days we do not use this word because this is very derogatory. And impotence refers that it is as if there's complete loss of erectile function. So the modern word is erectile dysfunction. This is more easily presentable. Then hypogonadism. Hypogonadism is a separate disease, but I just discovered while I was preparing that the incidence of hypogonadism in patient diabetes is much more than normal people. Then premature or retrograde ejaculation or absence of ejaculation, sometimes called dry orgasm. Then anorgasmia, when somebody doesn't get the orgasm. So these are several possibilities related to men's health which can happen in diabetic patients. So libido relates with sexual performance. I believe more libido would charge one more, and perhaps every mechanism involved in erection and the rest of the sexual function would be enhanced, and that would lead to better performance, and perhaps better performance would translate into increased libido for the next time. Once somebody is unable to perform well in this act, that could lead to performance anxiety, and next time one may be actually reluctant to undertake this activity. So there's a correlation. Both of them, they enhance each other. Now, the second one is erectile dysfunction, previously impotence. There are several possible abnormalities. Some of them are physical. They have biochemical basis. They have histological basis. And other, they have functional, and they have some maybe associated anxiety, something like that. Now, autonomic neuropathy is definitely a real problem. And again, I state that autonomic neuropathy in general in diabetes is grossly underdiagnosed. So many people say bloating, abnormal sweating, abnormal urination, they're all due to autonomic neuropathy, and we don't actually formally label them as having autonomic neuropathy. And one of the manifestations of autonomic neuropathy is abnormal erection. You would know, as I'll explain the mechanism of erection. Sympathetic nervous system, particularly the parasympathetic nervous system, is very, very closely linked with erection. So autonomic neuropathy, and then vascular disease. We all know type 2 diabetes is characterized by central and peripheral vascular disease. And since this mechanism also involves
circulation, increased circulation. So vascular disease would also cause impotence. But according to my understanding, a small percentage of the patient with diabetes and erectile dysfunction, they actually have vascular disease. But some, those have vascular disease, they actually, I think, need a separate type of treatment. Then atrophy of trabecular smooth muscles. And again, I will show you the picture. The trabeculae have muscles in its wall, smooth muscles, which remain in the contractile state, keeping their capacity, the capacity of trabeculae to the minimum. But when there is arousal, then when the parasympathetic system is activated, then these trabeculae, the muscles relax and their capacity increases to several fold. They are filled with blood, and that is how erection occurs. Medication, so many medicines, some of anti-diabetic medicine, and so many other medicines which are used for comorbidities, they can at least contribute to erectile dysfunction in men. Then psychological. I think previously, I believe it was believed that most cases of erectile dysfunction, they have psychological basis. Perhaps that was not right. It was just assumed because we did not have any physical basis. So it was assumed that there must be psychological. Of course, there are some cases who have pure psychological basis, but you know, everybody who has physical basis of erectile dysfunction would definitely have psychological overlay also. So that way is going to contribute to aggravate the problem. So this is the first agenda item we have done, possible sexual abnormalities in diabetes mellitus. And now I'm going to talk about normal mechanism of erection. It's a very, very complex system, and it requires several body organs and functions to work very, very closely, integratedly to perform this action. It starts with the brain. First of all, there is a thought process, maybe triggered by olfactory sense, visual, auditory, tactile sense, that triggers the process of arousal. So first thing is arousal. That means you are charged here mentally. And that then leads to activation of parasympathetic system. Now, parasympathetic system is mainly responsible for tumescence, the erection. Along with that, somatic nerve systems are also involved. So signals from brain are taken to the organ which is involved. Then the vascular phenomenon. In the vascular phenomenon, primarily there is dilatation of the arteries which supply corpus cavernosum, and then they dilate, there is increased circulation. Also, there is relaxation of smooth muscle of trabeculae that provides more space, and then there is compression of draining veins. That is how engorgement occurs. So vascular phenomenon, very, very important. And then you need to have intact endocrine system. Although it is reported that those people who have androgen absence, those who have absence of FSH and LH, they can also have erection. They could also do perhaps intercourse also, but it would be very, very poor. So intact endocrine system, particularly pituitary and gonads, are required for proper erectile function. Then, because of the stimulation of parasympathetic nervous system, there is release of nitrous oxide, nitric oxide. You know, normally parasympathetic nerves, they release adrenaline, noradrenaline, or catecholamine, acetylcholine. But this is non-catecholamine and non-acetylcholine neurotransmitter called nitrous oxide. This is particularly involved in dilating the vessels and also producing what is called cyclic GMP, which is responsible for dilatation of the vessels. This leads to tumescence, which is erection, and then there is activation of sympathetic nervous system. Once the sexual activity is almost near completion, that is when sympathetic nervous system comes in. That is actually basically to terminate it, to close thing, and
that is, I think, sympathetic nervous system normally initiates these processes, but when it comes to sex, it actually closes it. Parasympathetic system is the main one which is responsible. And then sympathetic nervous system will do just the opposite what parasympathetic system does, and everything will be back to normal, and normal flaccid position will be achieved. So all these systems, they have to be in perfect state and work in harmony to perform this complicated function, starting from arousal to engorgement to ejaculation, or orgasm and ejaculation. So perhaps that is why people used to say, okay, it's not an easy job. Okay, now this is the structure you can see on the left side. This one is a cross section of penis. Some, I'm sure you all know, these are corpus cavernosa, two of them. They have these trabeculae, which are very, very narrow spaces because of the contraction of the muscles in their walls, and these central arteries here and here. And then these are emissary veins. So what happens is, first there is dilatation of these arteries, and then relaxation of these trabeculae because of cyclic GMP. And then because the pressure builds up, in these trabeculae, and then these emissary veins are compressed against tunica vaginalis. We call them tunica, I think, not vaginal, tunica. So these veins, they stop draining. Now imagine a situation where inflow of blood has increased and outflow is stopped. So the pressure will build up. So if you imagine just physics, the maximum pressure achievable in these trabeculae would be according is equivalent to your systolic blood pressure. But actually there is further contraction of some muscles. So pressure in these trabeculae could reach or exceed 200 millimeters of mercury. So that is why there is so firm erection. And this is the filled one. So this is, these trabeculae are filled with blood and veins are compressed. So this is erectile state. So these are the structured release of nitrous oxide from the parasympathetic nerve terminals, and also the endothelial cells of trabeculae, and also the release of prostaglandin E1. They cause formation of cyclic GMP, which is a potent vasodilator, and also reduce intracellular calcium, which also leads to vasodilatation. The third step is the engorgement of blood, and the venous, there is engorgement of blood. So that is actually increased pressure. Sympathetic nervous system comes in, and then endothelin is a vasoconstrictor. So endothelin will just do the opposite of nitrous oxide. There will be vasoconstriction. There is also something called Rho kinase. That is also a vasoconstrictor. So this is how this entire process of several minutes is then over. So this is the mechanism of normal erection. And now I will talk about the evaluation. Somebody presents with this problem. I think one unfortunate thing is that mostly people feel very, very reluctant to talk about this matter. It may be very distressing for them. It may be disrupting their lives, but still they do not feel enough courage to talk about this matter. And hardly ever they come for this particular purpose. They come for control of diabetes, and we also do not encourage them to talk about this. So I think best service can be done if patient comes for this problem, so that your entire consultation time is given to this one, and the problem is discussed in detail, and physician has to play a role to encourage the patient, making him realize that we do acknowledge that this is a real problem, and this has to be addressed, and this has to be taken care of. So I think with that body language, we need to address this issue. First of all, history. A detailed conversation with the patient is very, very encouraging for him. He would come up with his personal things also.
once you establish the rapport, so I think history and then the sexual history, the literature says this history is taken best in the presence of a partner. But I do understand in our country, it would be difficult. I say when a couple comes, when the consultation is near completion, the husband would ask the wife to go out. And I know for sure that what they are going to say now. So I think it should be encouraged, but perhaps in our culture, we cannot discuss this. I think we can continue our practice to discuss the matter with a male owner. Then medical history, whatever medical condition, not only diabetes, is heart failure, is COPD, is liver disease, is kidney disease, all they affect this erectile function. Then of course his psychosocial, his conflicts at home, they can all affect. So detailed history is important. Also the history of medication this patient may be taking. You might ask us to go through, ask him to provide his prescription and go through the medicine. If I see 100 medicines in any list, I think it would be very, very difficult to find few which actually helps to get erection. Most of them would have a negative effect. Most antihypertensive, many anti-diabetic, most antidepressant, most antipsychotic drugs, they have this bad effect on this function. On examination, cardiovascular system is important because you need a good cardiovascular system to provide a required blood for tumescence. And of course, any heart disease would have adverse effect. Then central nervous system and peripheral nervous system. Of course, if somebody has evidence of peripheral neuropathy, there is likelihood that he would have neuropathy affecting his genitalia also. And then genitalia examination. I think physical examination of genitalia is absolutely important. You could see the size of testes, you could see the size of penis and the pubic hair distribution. And I think I always do. Though it may not be a very pleasant experience for the patient or myself, but I always examine genitalia if somebody has sex-related symptoms. And then investigation, there is actually a long list of investigation one could plan, but I think some of them are important. First of all, you would like to assess the diabetic status by HbA1c. And I think testosterone level should also be done. Best is done in the morning because it has got diurnal variation. Sex hormone binding globulin is very important because this can bind testosterone and testosterone becomes non-functional, although it is measured when you measure total testosterone, but it is not functional, so that has to be measured. And prolactin. Prolactin has negative effect on libido and the sexual performance, and many people are having many drugs, actually anti-psychotic drug, which can raise prolactin, and prolactin may be elevated because of prolactinoma also. So I think prolactin should also be tested, but I guess if prolactin is only marginally elevated, you will ignore this because it's a fairly common finding. In investigation, you could do penile ultrasound, and it is done. I've advised many people, they got it done from a very famous name, Professor Nawaz Anjum. They do actually inject something which triggers the whole mechanism of erection, and then they measure blood flow, the Doppler, and the other things, and think very useful information can come from Doppler of penis, and there could be actually leakage of trabeculae, leakage of veins, which can be detected on the ultrasound, and also the Doppler. So very, very useful test. And then angiography. If you really suspect that the feeding vessels are atherosclerotic, then pelvic arteriography may also be very useful. So of course, every test will not be needed in every patient, and according to the patient, we will plan the test. Now, one thing which is important is to differentiate between psychological causes of erectile dysfunction and physical causes. Psychological causes may be sudden and severe. And this Thanda Ghosh was a play by Minto. आपने पढ़ा होगा, मैं जवेद साहब ने पढ़ा होगा. If you allow me, I'll narrate the story. वो उसमें वो है स्याह हाशिए, उसमें multiple stories हैं, बहुत ही ट्रेजिक स्टोरीज हैं. वो पार्टीशन के ऊपर बनी. पार्टीशन के ऊपर जो दोनों ग्रुप रेड कर रहे थे, तो एक सिख जो है वो एक औरत को रेड करता है, किसी घर पे रेड करता है,
औरत को, young girl को लेता है तो उसको rape करता है. और after raping her, he realizes that the woman was already dead. And that has such a bad effect on his psyche that then when he goes home, he is unable to perform. Or his wife tries to entice him, tries to provoke him, but he's just unable to get erection. And this is a typical example of psychological. Similarly, in our normal life, sudden psychological trauma may cause sudden and severe loss of erectile dysfunction, and it may be selective. You know what I mean. And physically, usually because of physical condition they develop with time, the physical cause of erectile dysfunction is likely to be gradual, progressive, and maybe you are able to identify a possible cause. But it is important, I have already told you that somebody with physical cause of erectile dysfunction would probably also have psychological overlay because it's nobody feels good about it. Now, this is the John Hopkins questionnaire for ED. This is a detailed several pages questionnaire. I was not able to reproduce the whole questionnaire, but this is the barcode if you want to scan, or you just type John Hopkins questionnaire for ED. Number of questions. I think you can give it to the patient, he can fill it, or you can ask them, translate them, and then you ask him. And then you will be able to know how bad the problem is. So that is done on diabetes and erectile dysfunction. What is the correlation? This is the problem. You could have autonomic neuropathy in diabetes. You may have vascular disease in diabetes. We have already talked about. And then atrophy of trabecular smooth muscles, because smooth muscles are affected in diabetes. And that could also be affecting this trabecular smooth muscle. So these are all organic bases. And then obesity, metabolic syndrome, hypertension, CVD, smoking, all comorbidities of diabetes, they have adverse effect on erectile function. And medication, psychological causes also. So what I'm going to show you now is going to surprise you because it surprised me, literally. So this is a survey at the time of diagnosis, the first year of diagnosis of diabetes. According to that questionnaire, John Hopkins questionnaire, 23% of the people had erectile dysfunction of some degree. Imagine newly diagnosed, maybe younger, around 40, and just 1 year history of diabetes, 23% had some degree of erectile dysfunction. They did not discuss in their medical consultation, but they actually had when they were given a confidential questionnaire. And if you have diabetes of 10 years, then 50% of the people are likely to have erectile dysfunction. Now, most important is if diabetes is more than 20 years and somebody is 65 or older, almost 90% would have erectile dysfunction. So such a big problem. We don't even discuss. When we give an outline of diabetic complication, often we do not even mention erectile dysfunction because it is not addressed properly. So on this, I make a theory. I would, of course, want Professor Javed Akram's input on this. There was a time when we used to say diabetes is coronary artery disease risk equivalent. That means once you have developed diabetes, once you are diagnosed with diabetes, it is as if you already have myocardial infarction. But then later it was realized that that is an overstatement. Then the new statement was that diabetes of approximately 10 years is equivalent to having coronary artery disease. So this is why diabetes 10 years is equivalent to have erectile dysfunction. I think having erectile dysfunction, especially of vascular region, is like having coronary artery disease. So this is the theory, coronary artery disease risk equivalent. So we have done diabetes and erectile dysfunction, treatment of erectile dysfunction, and luckily there are a number of things we can do about it. Number one, natural ways to improve erectile function. I do not know much about, but this is the information taken from a reliable source on the internet. A good diet, exercise, good sleep, weight loss, psychotherapy, sex therapy, and stress reduction, they can all have beneficial effect on one's sexual health.
Now, this is the treatment plan of erectile dysfunction by Mayo Clinic. They have given step-by-step algorithm, and which I'm going to reproduce with some additions. I have made 2 additions that I'll highlight, and I might have missed some problems also, but this is the Mayo Clinic guidelines for the treatment of erectile dysfunction. Now, before starting treatment, I think we must make sure that patient should have good glycemic control. That, of course, is not going to reverse erectile dysfunction, but that would provide a better platform, better foundation to work on erectile dysfunction. And I would again argue, again, Professor Javed's approval would be needed, since it is a vascular disease, and since it is considered a high-risk patient with atherosclerotic cardiovascular disease, I suggest that these patients should be better treated with GLP-1 receptor agonists because they are recommended in this category. So vascular origin erectile dysfunction should be considered as one of the indications for the GLP-1 receptor agonist therapy after metformin. Remove possible drugs, if possible. The number of drugs which have anti-androgen activity, and some have a suppression effect on the where the arousal starts. Some have the sympathetic activity, for example, anxiety, sympathetic activity, suppresses sex. So I'm not sure. Again, I would like everybody's advice here, but my understanding, metformin has anti-androgen effect. So should we stop metformin if somebody is diagnosed with the erectile dysfunction? I personally think it is not necessary because stopping this is probably not going to reverse the process. So all the drugs which are possible should be removed. Metformin, beta blockers, particularly the old-fashioned beta blocker. The newer ones like nebivolol. Nebivolol does not have adverse effect. In fact, it can actually promote because it promotes. It's a vasodilator beta blocker and it produces nitric oxide. Then calcium blocking agents, and then antidepressant, anti-epileptic, all these drugs, if possible. Some of them may be very essential, but if possible, you should withdraw them and provide a substitute. So the treatment option, when it comes to medication, the treatment of choice is phosphodiesterase type 5 inhibitors, PDE inhibitor, for all causes of erectile dysfunction, whether it is due to endocrine deficiency, whether it is due to some physical problem, whether it is due to psychological. The treatment of first choice is phosphodiesterase type 5 inhibitors. This is actually an enzyme which deactivates nitrous oxide. So by suppressing this enzyme, we will allow nitrous oxide and cyclic GMP to build up, which will keep the vessel dilated, trabecularly dilated, so that the engorgement is maintained for some time till the sexual activity is over. So these are the drugs which are available. Sildenafil, the first one which came into the market, Viagra, which made history, then tadalafil, which is Cialis, and vardenafil, Levitra, avanafil, Spendra. And you all know none of these medicines is registered in Pakistan. And I don't know why. This is a real problem. If somebody is sufferer for this medicine is as essential as anti-asthmatic or anti-ulcer medication. I remember I'm not going to name, but Professor Javed knows, said proudly that didn't let this medicine register in Pakistan because he could see some abuse. Now, abuse comes before the use. Imagine. So I think but it's available. All these medicines are available, but the problem is they are very expensive because they are available under the shelf, and also we don't know about their origin, efficacy, maybe number 2 also. So these drugs, I think the literature says there is nothing to choose between. Any one is good enough. But there are 2 things which I would like to mention. The last one, Stendra. Stendra is the fastest acting. Tmax is half an hour. That means after taking, you get the maximum effect in 30 minutes. All others claim also that the effect is 30 minutes, the effect starts 30 minutes. The optimum effect, all other medicine is actually 1 to 2 hours, whereas Stendra is 30 minutes. So I think that is an advantage.
The tadalafil works for the longest duration, about 36 hours. So that is another advantage. Maybe one can do sexual activity twice in one pill. So how these medicines act, this I have already explained: arousal, parasympathetic nervous system, nitrous oxide, cyclic GMP, then relaxation of smooth muscle, then compression of vein, erection, sympathetic nervous system, reversal, then refractory period. After a complete erectile activity, there is a refractory period because sympathetic system is activated. It takes several minutes to cool down to allow another activity. And what does this sildenafil does is this conversion of nitrous oxide to cyclic GMP that is stopped, so that nitrous oxide vasodilator keeps in the system. Normal half-life of nitrous oxide is just 5 seconds. So this drug would keep this nitrous oxide and cyclic GMP for several minutes to allow the completion of activity. Possible side effects, and these drugs are also victim of nocebo effect. Nocebo effect is that if you have heard something bad about certain drugs, it is very likely that you will experience that bad effect even if otherwise you wouldn't have. Since you have heard bad thing about this drug, so you would probably experience this out. So people are scared of using. People are very keen to try these medicines, and they are also very scared of trying them. So I think it's a difficult situation. One is headache, mild to moderate headache, which could last for 24 hours because of vasodilator action. All vasodilator drugs, even Norvasc, which we use for hypertension, nitrates, which we use for ischemic heart disease, they cause headache. And then hypertension, hypotension, contraindicated with nitrates. So this is definitely one of the contraindication. If somebody is on nitrate therapy, I think patient should not have taken nitrate within the last 12 hours. If somebody is taking nitrates, I think he should be instructed to miss one dose and then take this sildenafil or whichever what he wants to take. Then risk of sudden death. 1 out of 50,000 sexual activities, there is a risk of death. 1 out of 50,000, maybe too small a risk one may be willing to take, but perhaps the associated embarrassment of dying such a death may not be acceptable. Active ischemic heart disease may be contraindication, but having ischemic heart disease is not contraindication. Then, and this is what I added because this Mayo Clinic, they did not mention about these drugs, and I have personally no idea how these drugs work. Basically, I think they also have effect similar to sildenafil. They have a vasodilatory action. These Panax, Jinxon, I don't even know how to pronounce them, Piginorol, Prelax, Tribulus. Tribulus is many companies, they promote drugs, they have the Tribulus. And then L-arginine is precursor of nitrous oxide. Yohimbine is very famous. It increases libido, and ginkgo biloba is vasodilator. So all are the companies who make, maybe I think if one has been given this first, the class of drug, if they do not work before going to the next step, maybe you would like to try these. Now, there is evidence. Now, this I researched, and this a paper. This is published in Arab Journal of Urology. They have provided evidence that these agents, they work. Against placebo, they definitely improve erectile function. Now, the second step is those who have not responded to phosphodiesterase type 5 inhibitors. For them, we have a treatment. On one hand, it is the most effective treatment. And on the other hand, it is perhaps the poorest acceptability because it is even difficult to conceive injecting into one's penis. But papaverine is a vasodilator, alprostadil, this is the active form of this drug, and this is injected intracavernosally and also suppository through urethra. And then there is a trio, papaverine, alprostadil, and
phentolamine. Phentolamine is alpha-1 blocker, so vasodilator. So all of them maybe in 1 or 2 or 3 injected in the penis, and within 5 minutes, one can get full erection. One of the patient is using, and he says, okay, there's no medicine better than this. These are some of the features, 50 to 90% effective, at least from sufficient to full rigidity with this injection. I think those Viagra things, they do not cause full rigidity. They give you sufficient rigidity to be able to perform sex, but not full. But this intracavernosal injection can give full rigidity. Acceptance is poor. Priapism, which is sustained erection, which is a very serious and embarrassing situation, 1%, and then fibrosis. Repeated injection could lead to fibrosis. And this is a device vacuum pump, and it's a battery-driven pump after the arousal. And you can figure out from the picture how to use, and motor and is run, and then the vacuum is created. This would suck blood into the penis and would cause erection. But those who have used this, they have reported that there is definitely erection, but they say that it does not look normal and it does not feel normal. I don't know what it means, but this is like a sort of an artificial way, but it also works. Then the revascularization and vascular repair and stents and grafts. If there is an artery which feeds the cavernous vessel, I think that can be stented and that can be also grafted. So this was about the erectile dysfunction. Now treatment of other relatively less common sexual abnormalities related with diabetes. First of all, diabetes and metabolic syndrome and androgen deficiency. This is a paper which published in, I think, from PubMed, current opinion on endocrinology and diabetes and obstetrics. So androgen deficiency, diabetes, and the metabolic syndrome in men. And this fine print I just highlighted, 20 to 64% people with diabetes are likely to have androgen deficiency. So androgen deficiency is going to compound the effect of erectile dysfunction because androgens are also needed. So we need to address this issue also. So this is the menopause, you all know, and then this is the andropause. I will not go into the detail to allow some time for discussion. And andropause is actually the hypothalamic and pituitary phenomenon, FSH and LH start dropping earlier than menopause. And you can imagine that in diabetic patient, this andropause comes even earlier. In normal people, it starts at 35, but in a diabetic patient, it starts even earlier. And there would be deficiency of androgen. So this is again a joke which was told to me by one of our late professor, and we were discussing in a very casual thing, and he made a joke and he presented the joke in writing. He just wrote 3 words, and these are the 3 words: daily, weekly, weekly. This is about men's sex health, so you, I'm sure, know what it means. Now, interpretation of lab tests. This is testosterone. The problem with hormones is that they have very, very wide range. Now, when it comes to testosterone, something like 250 to 1250 is a normal range. So it is very likely that someone has deficiency, but still falls within the lower normal range. So I think we accordingly interpret. There may be a case who have sufficient so that we can rule out no treatment, no androgen required. Then there may be a person who has androgen level in the lower 1/3. This person has insufficient. This will correlate with the symptoms. And if patient is symptomatic, I would definitely like to give androgen with phosphodiesterase inhibitors. And then deficient people should definitely have. Like other things, there are natural ways to boost testosterone: good fats, low carbs, zinc, reduction in weight, vitamin D, and magnesium. These are all things which one should do to improve one's testosterone level before taking that treatment. Overall plan, we do clinical evaluation, laboratory evaluation, and we
Then we discuss with the patient and we discuss pros and cons, and then we give a treatment trial, right? Treatment trial may be in the form of tablets or gel or injection. And then after 3 months, we reevaluate. And after reevaluation, there could be 3 possibilities. One possibility is that patient has shown clinical improvement and testosterone is also normalized. Then of course, the best way to go is to continue testosterone because according to the trial, it has worked. Then the second possibility is there's no clinical improvement and testosterone is still low. Then maybe you would like to enhance the dose of testosterone. And the third one is no clinical improvement, whereas testosterone has become normal. Then perhaps you should look for another cause. So comparing various preparation, we have injection, we have oral tablets and gel. Injection is once fortnightly and painful, maybe abscess formation, roller coaster effect, because every fortnight you inject, level may rise and drop, and cost is minimal. Just 500 rupees per month. I just made a calculation. Whereas tablets and gel, daily, once a day or twice a day, convenient, but compliance is an issue. Uniform effect, if you take a daily, there is a possible liver side effects, but since the new preparation, they are made in a way that they are absorbed with fat. So once fat is absorbed, this testosterone is taken to the body through the lymphatics. It doesn't go through the liver. So liver is spared, so there is no hepatotoxicity, but the cost is definitely much more than injection. Premature, yes, another cause is premature ejaculation. There is non-pharmacological behavioral techniques, pelvic floor exercises, pause squeeze techniques, condoms to reduce the sensitivity, and then the pharmacological, topical anesthetics, and SSRIs. Now, I remember about, I think 5 years ago, one company, I don't even know the name of the company, one company came with no other products. They came with this depoxetine with the name of Everlong. They said that this is meant for prolonging sexual function. And then other drugs also was found to have this paroxetine also have, like Seroxat. They also have this effect on prolonging the ejaculation time. So premature ejaculation may be addressed. And tramadol, which is a painkiller, that is also useful. Loss of libido, investigate underlying psychological, neurological, or endocrine disease. And these are the things which can be, again, taken alternate medicine, which can improve one's lost libido. Now I've done with the agenda. Now I'm going to present the summary in just 2-3 minutes. Evaluation, first of all, recognize the problem. Encourage the patient to talk about it. Maybe you can ask him to come again for a separate meeting so that the problem can be duly addressed. Rule out all other causes. Get better A1C, preferably with GLP-1 receptor agonist or any other drugs. Of course, you don't need to wait for glycemic control to be ideal before you take the next step. Immediately you take the next step. The recommended dose is a drug is low dose of phosphodiesterase inhibitors with testosterone if there is androgen deficiency or insufficiency. Otherwise, those who have enough androgen, testosterone is not going to help and is not indicated. So just low dose of phosphodiesterase inhibitor, anyone available. And they say it should be tried at least 5-6 times. If patient takes only once, it doesn't work, then patient should be encouraged to try it 3, 4, 5 times before we take next step. Not effective, try high dose. For example, if you take Viagra, maybe one can start with 25 milligram, move on to 50, 75, then 100. If you use CLS, 10 milligram and 20 milligram. CLS is also available 2 milligram, which is meant to be taken every day because that also helps prostatic symptoms. So if the high dose is also not working, not effective, try alternate medicine. So this is the point I added. Mayo Clinic has not mentioned about the alternate medicine. I think the next step treatment is going to be difficult, expensive, with poor acceptance. Before going to the next step, I think it is worthwhile trying this alternate medicine, maybe along with phosphodiesterase inhibitor.
If that doesn't work, then consider injection or device therapy. Of course, it is going to have a lot of cost and patient has to learn how to inject. And injection is also not available to the best of my knowledge, although people are using it, but it's not registered. Caverjet is the name of injection. So if these devices and injections are not available, not acceptable, not effective, then I think, I think then give up. है ये सारा कुछ ट्राई कर लिए सर सबर शुक्र करें. Thank you, and this lecture is going to be available on medicine. It will be uploaded to those who have, I hope I have sensitized few on this topic. So if you're interested to learn more, please, world is the limit. Thank you. Sir, please, Professor Dr. Javed Akhtar Sahab. Javed Akhtar Sahab, Dr. Zahir Akhtar Sahab, and Dr. Fazal. I really very thankful to Dr. Professor Aziz Rahman for his so much elaborated on the topic, the treatment as well as his pathophysiology. Now I say, Professor Dr. Javed Akhtar Sahab, please have your expert. मेरा ख्याल है पहले अगर कोई questions हैं, they have been such a good audience, whether online or physically. I think we'll take, if allowed, questions first, a couple of questions, and then we'll have the comments from panelists. Although ऐसे lecture के बाद कोई comments देने की ज़रूरत नहीं होती, because अजीज साहब के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ, simplicity is in his genes, and it also reflected today. I learned a lot. मेरी पूरी ये पैड भर गया है पढ़ के लिख के माशाल्लाह. अरे ये टॉपिक इग्नोर्ड टॉपिक है and not talked about. और मेरा ख्याल है जितने भी इस हॉल में हमारी बहनों के अलावा सारे मरीज ही बैठे हैं इसी चीज के. At life, sometimes in the life we do think that we have a performance problem or some problem. ये एक डायनामिक सी चीज़ है, इसलिए बहुत इंटरेस्ट जनरेट किया आपने. और मेरा ख्याल है मेडल स्टैंड इंशाल्लाह आज के बाद आप देखिएगा कि एकदम एक नई हाइट्स छुएगा. जी क्वेश्चन ले लें सर. हाँ जी. I don't really know, but I don't really know, because I gave you the reference. I think you can go through this. They must have given the possible reasons. Sir, if you allow, I would like to say something. इसमें ऐसा है कि आपने पूछा कि what is the exact reason of androgenic deficiency. Professor, as in diabetes, especially androgenic deficiency. Professor has already narrated, but we are unable to understand the reason, because it's vasculogenic and neurogenic deficiency. It causes, it disturbs the somatic system and the vascular system of the body. So when the blood supply of the testes is decreased, the nerve supply is disturbed, then it definitely reduces the androgen production. That is the reason. सर हाइपोगोनेडिज्म, सर इजाजत हो प्लीज. हाइपोगोनेडिज्म एक डिफरेंट एंटिटी है. जब भी आप वर्कअप करते हैं ना जी ईडी के लिए, तो उसमें आप हाइपोगोनेडिज्म एक डिफरेंट चीज है. जब आपने टेस्टोस्टेरोन लेवल करवा लिया ड्यूरिंग द वर्कअप एंड दे आर फाउंड टू बी लेस देन 12 नैनोमोल, और फिर साथ एफएस कम है, एलएच कम है, और फिर सेक्स बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स कम है, तो इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लम जो है ना वो एंडोक्राइन की प्रॉब्लम है रादर देन द डायबिटीज. तो उसके लिए फिर जो रेफर किया जाना चाहिए वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को सर जवेद अकरम साहब के पास एज ए केस ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी या एंड्रोजन डेफिशिएंसी के लिए रेफर किया जाना चाहिए. इसका डायरेक्ट ताल्लुक डायबिटीज के साथ नहीं है. देखें, ये मेरा ख्याल है कि इतना डाटा अवेलेबल नहीं है कि डायबिटीज कंट्रोल के साथ किसी ने भी कोरिलेट किया हो. मैं इसको, क्योंकि अजीज साहब ने मुझे हुक्म किया कि जी आपने
इधर ज़रूर ये लेक्चर सुनना है, और आई थिंक इट वाज डेफिनेटली वर्थ इट फॉर मी। मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी, लेकिन मैंने कुछ अपना होमवर्क करने की कोशिश की इस टॉपिक पे, और मुझे बड़ी मायूसी हुई कि पाकिस्तान में से मुझे एक भी रेफरेंस नहीं मिला। मतलब हम दुनिया का इतना बड़ा मुल्क है, और एक भी, विच हाईलाइट्स माय पॉइंट कि हमारा लोकल डाटा ज़रूर। मेरी आज ये हम्बल रिक्वेस्ट होगी बिफोर वी टेक फर्दर क्वेश्चन, कि बहुत अच्छा एक लेक्चर हुआ। क्योंकि ये जो क्वेश्चनर की बात हुई, जो इसको रेफ़र किया गया जॉन हॉपकिंस का क्वेश्चनर, बहुत सारे क्वेश्चनर्स अवेलेबल हैं कि व्हाट इज़ नॉर्मल सेक्सुअल एंड व्हाट इज़ एबनॉर्मल। मेरा ये ख्याल है कि सबसे आसान ये होगा, और ये बड़ी हाई इम्पैक्ट रिसर्च होगी, कि हम एक क्वेश्चनर डेवलप करें उर्दू में, सिंपल सा। और मेरा ख्याल है बेस्ट बंदा भी, आप पीआई बन जाएं, मैं को पीआई बन जाऊंगा, तो एक स्टडी ग्रुप बनाते हैं जिसमें मियाँ साहब को भी, इनके लोगों को भी डालते हैं। हम सिर्फ एक क्वेश्चनर लेते हैं बिटवीन से 40 एंड 60 ईयर्स ओल्ड मेल, ठीक है, चाहे उनको डायबिटीज़ है कि नहीं वो भी रजिस्टर हो जाएगी, वो भी सारा कुछ, ब्लड प्रेशर है कि नहीं, कोई दवाई ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। और ये क्वेश्चनर, सिर्फ क्वेश्चनर बेस्ड एक स्टडी होगी कि जिसमें हमें पता चले कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पाकिस्तान में। और ये हम रूरल और अर्बन यानी शदरे से आगे भी चले जाएंगे, शदरे के बाद भी मस्जिद को लेंगे सेंटर पॉइंट, एवरी 5th हाउस होल्ड में जाएंगे, ताकि सिलेक्ट पॉपुलेशन ना हो। तो ये मेरा ख्याल है कि ये है कि प्लीज लिसन टू द पेशेंट, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मरीज बेचारे खपते ही रहते हैं, बहुत सारे मुझसे, मेरे पास ऐसे मरीज आते हैं, मेरा ख्याल है दर्जनों में। मैं अभी भी, अगर उनका प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी शादी होने वाली होती है, और वो बड़े पैनिक में होते हैं, बड़े घबराए होते हैं कि सर जी मेरी ब्याह होने लगा, तो मैंने लगता है कि मैं, मतलब एक हेजिटेंसी, एक रिलक्टेंस होती है। उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम उसको सुनते ही नहीं है, हम कहते हैं यार नहीं नहीं ठीक है, कहते तो बेशक उसकी रीअश्योरेंस ही चाहिए, दैट्स ऑल्सो ट्रीटमेंट। तो ये एक, जैसे अजीज साहब ने कहा कि इट्स लेस टॉक्ड, लेस लिसन्ड एंड लेस एड्रेस्ड प्रॉब्लम, कि हम भी इसको इतना, अगर वो मरीज बता भी देता है वल, तो वो हेजिटेंट होता है, अगर, लेकिन वो कई मरीज बताते भी हैं, और जब बताते हैं तो हम उसको लिफ्ट ही नहीं कराते उस चीज़ को। तो इसलिए, और मैंने बहुत सारी जो कोमॉर्बिडिटीज हैं, स्पेशली क्रॉनिक लिवर डिजीज, वो भी इंसान है, देखें ये भी अल्लाह ताला ने एक नेमत ही दी हुई है, तो वो बड़े डिप्राइव्ड होते हैं। मैं देखा है कि उसका ऑब्वियसली प्रॉब्लम इज विद द लिवर मेटाबॉलिज्म एंड ऑल दैट, मगर उसका प्रॉब्लम होता है,
उसके गैनोकोमेस्टिया भी हुआ होता है, एल्डोस्टेरोन भी ले रहा होता है, और इस तरह। और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए चीज है कि सबसे ज्यादा अगर क्वैक्स के पास लोग जाते हैं तो इस बीमारी से जाते हैं, तो वो नॉर्मल भी होते हैं और एबनॉर्मल भी होते हैं, और शायद उनके गुर्दे बिल्कुल सही होते हैं शुरू के, लेकिन मैंने बहुत सारे देखे हैं वो पुश्ते ले लेके उनके गुर्दे भी फेल कर देते हैं। इसलिए देखें क्यों जाते हैं उनके पास, यह मेरी और आपकी कमजोरी है। मियाँ साहब बड़ी तकरीरें करते हैं कि जी क्वैकरी की उस दिन इन्होंने की, मैं उस मीटिंग में मौजूद था जो हेल्थ केयर कमीशन की, बिल्कुल सही इन्होंने कहा, लेकिन वो वक्त नहीं था कि मैं ये बात इनको कहता, मैं अब कहता हूँ। वो हमारी कमजोरी की वजह से, हमारी मर्दाना कमजोरी की वजह से नहीं, हमारी अपनी कमजोरी की वजह से जाती है। मैं आपको सही बताता हूँ, अगर हम मरीज को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, कई मरीज मैंने देखा है वो नॉर्मल होते हैं, बिलीव मी, मेरी इवैल्यूएशन ये होती है कि वो नॉर्मल है, उनमें रिलक्टेंस हेजिटेंसी होती है। अच्छा, कई मरीज ऐसे हैं and that is in about 50s age, 55, लेकिन this is very important aspect of life. डिप्रेशन भी करती है ये, और ये प्रॉब्लम डिप्रेशन भी करती है, so it's a vicious cycle. So it's most important thing to discuss than not to discuss. तो इसमें जब हम कह देते हैं उसको कि नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, भी उसके लिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, तो इसलिए वो ही इज बाउंड टू गो टू ए क्वैक कि यार इन्हें तो सुनी भी नहीं, इन्हें समझी भी नहीं। जब हम टाइम नहीं देंगे, उसको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, और मैं समझता हूँ कि ये मरीज के लिए उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जब हम उसको हौसला। और बहुत सारे 50s में मैंने पेशेंट देखे हैं, इफ they change their sex partner, ठीक है, if they change their sex partner, their performance is okay. So there is one component, मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं आपको एक मतलब मेरी बहनें बैठी हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरे पास एक पेशेंट था पार्किंसंस का, बड़ा वेल नोन मरीज है, तो उसको एक दिन मैंने ना सिलेंडाफिल दे दी, उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी था, उसको डायबिटीज भी थी थोड़ी, तो वो मुझे कहता है जी, वो बहुत अमीर आदमी है, ऑब्वियसली मैं नाम नहीं लूंगा, वो बड़ा अमीर आदमी है, उसने आपको पता है सिल्डेनाफिल क्योंकि इधर स्मगल होके आती है, ईरानियन सिल्डेनाफिल जो है 100 मिलीग्राम वाली, वो आपको मिल जाती है कोई 350 रुपए की गोली, जो असल अमेरिकन है फाइजर की जो ओरिजिनल है वो कोई 900 रुपए की मिलती है। तो जाहिर है 900 वाली अमीर आदमी था उस वक्त, वो 1300 रुपए की, उसने गोली खा ली, उसने मुझे मुसीबत डाल दी कि भाई वो भाभी ताड़ी घर नहीं है, तो मैं की करा, मैं कहा यार सबर कर लो जनाबे वाली, कोई नहीं। एंड ते उसने मुझे इतने फोन किए, मैं फिर मैं की कर सकना, कोई नौकरानी आए थे उन्होंने गुजारा का, उन्हें कौन दिना ते लोड़ ही नहीं पैंदी, डॉक्टर साहब तुसी की गल्लां करदे हो। यू नो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग आई एम टेलिंग यू कि ये इशू ये भी है, ये भी मैं आपको बताऊं, कई दफा आपके मैरिटल रिलेशनशिप ऐसे हुए होते हैं कि दे आर हैम्परिंग योर सेक्सुअल लाइफ फॉर वॉट एवर द रीजन इज, तो इसलिए ये एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है एंड इट रिक्वायर्स ए कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्स। जो दुनिया में तो बहुत एलोप्रिस्टोल की प्रोस्टासाइक्लिन के सेल्फ इंजेक्शन भी, कर्नल सेल्फ इंजेक्शन भी ट्रीट करते हैं, दैट इज वन ऑफ, और पेसरीज भी अवेलेबल हैं, और उसकी बुगीज भी अवेलेबल हैं, उसकी क्रीम्स अवेलेबल हैं, बहुत कुछ अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये इन्होंने रजिस्टर नहीं हुई, लेकिन मिल सब कुछ ही जाता है, और मिलता भी घटिया किस्म का है। मैंने तो, मेरी तो ये जंग है, क्योंकि मैं सिलिंडरफिल इस इरेक्टाइल डिसफंक्शन में यूज करता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा इसको प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन में यूज करता हूँ, ज्यादा इसको मैं और बहुत सारी बीमारियों में एज ए वेजोडाइलेटर, एंड एज यू नो कि ये दवाइयाँ इन्वेंट हुई थी एज एंटी हाइपरटेंसिव, और उनका साइड इफेक्ट आया था, और यही साइड इफेक्ट था इरेक्टाइल डिसफंक्शन को। तो इसलिए मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारा एटीट्यूड अगर आज इस लेक्चर से तब्दील हो गया, तो दैट विल बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज कि इसके मरीज के सुने और उसको एड्रेस करें। नहीं करेंगे वो, बिलीव मी, ही गो टू क्वैक। अच्छा सर, मैं आपको हमारा एक क्लास फेलो था, ही वाज अ डॉक्टर, और उसने अपनी खालाजाद के साथ उसकी शादी हुई, 5 साल तक उन्होंने कोशिश की कि हमारी शादी निप जाए, लेकिन ही सेड कि आई कैन नॉट परफॉर्म, नॉट इवन अ सिंगल टाइम। उसके बाद उसने अपनी माँ को बताया और उन दोनों ने दूसरी जगह शादी की, तो ही वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल।
ये मतलब ये अच्छा, दूसरी सर चीज ये है कि हमारे यहाँ एक तो सेक्स एजुकेशन जो है वो बिल्कुल नहीं है, उसको हमने बैन कर दिया। और नॉर्मल क्या फंक्शन होता है, हमारे जो सोशल मीडिया है इसने बड़ा काम खराब किया। मैं रिसेंटली, मेरे पास एक यंग लड़का जो कि 20 साल उम्र थी, शादी हुई और माँ के साथ वो रोता हुआ आया। उसने कहा, मैंने पूछा क्या मसला है, कहता है जी वो मेरी बीवी कहती है जी मेरी दोस्तों ने कहा है कि ये तो सेक्सुअल एक्टिविटी जो होती है वो 1 to 2 hours होती है। और उसके बाद वो चली गई अपने घर। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना। मतलब ये जो और वो जो उसने देख देख के वो पोर्न मूवीज, उसमें उन्होंने डबलिंग की होती है कई टाइम्स, उसको एनहांस किया होता है और लोग डिप्रेस हो जाते हैं कि हम शायद अब नॉर्मल है। तो मेरा ख्याल है कि ये नॉर्मल एक्टिविटी जो है लोगों को बताना ये बहुत जरूरी है कि बजाय इसके कि वो मैं इसकी मिसाल देता होता हूँ। अब चूंकि डिस्कशन सारे मैच्योर पीपल है, मैं मरीजों को मिसाल देता होता हूँ कि देखें कभी किसी एनिमल को आपने देखा मेट करते हुए, तो वो जस्ट 2, 3, 4 strokes and then it's done within just a few seconds होता है। ये देखें, अगर आप prolonged sexual activity करना चाहते हैं तो then you have to be trained for it. It also depends upon your training. हम सेक्स एजुकेशन हराम समझते हैं, हम स्कूल में बच्चों को नहीं सिखाते, बच्चे मोहल्ले के होमोसेक्सुअल से सीखते हैं। फैक्ट है, आई एम सॉरी टू से कि हम ये जुबान यूज कर रहे हैं, लेकिन बच्चे की माँ के गोद या बाप कोई भी बच्चे से ये बात नहीं करता, ठीक है। सेफ सेक्स की कोई प्रॉब्लम टीचर नहीं बात करता, वो उसको डर है कि कोई मौलवी का बच्चा बैठा मौलवी को बताएगा, मौलवी आके मुझे गोली मार देगा। अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हमें एज ए डॉक्टर कोशिश करनी चाहिए कि हमें एक विद इन दैट तहजीब कि हमारे लिए ये बीमारी है सर, हमारे लिए ये बीमारी से ऊपर नहीं है, हमारे लिए इट इज़ लाइक ए ब्लड प्रेशर, लाइक ए निमोनिया, लाइक ए डेंगी, एक ये भी बीमारी है। लेकिन दिस इज इम्पोर्टेंट बीमारी, में भी जानलेवा नहीं है मगर क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पेयर करती है। इसकी वजह से सुइसाइड्स भी होती हैं, इसकी वजह से डिवोर्सेस भी होती हैं। और मुझे दुख होता है, जैसे आपके दोस्त का आपने बताया, आपके मरीज का जो डॉक्टर था, कि नॉर्मल लोगों में ये एबनॉर्मलिटी समझी जाती है। इसलिए नॉर्मल सेक्स लाइफ बड़ी मुश्किल है कि कोई डिफाइन करे। इवन जब हम फीमेल सेक्स की बात करेंगे उनमें भी ये प्रॉब्लम है। तो ये बड़ा इशू है जो मेरा ख्याल है कि मेरे से कम हर रोज कोई ना कोई बंदा बात करता है। वो कहता है कल की बात है, मैं अब ग्रोन अप हम सब बैठे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल बात कर रहे हैं, हम कोई और बात नहीं कर रहे, कोई इल्जाम लग जाए किसी पे। कल एक बंदा आया, यंग बंदा था, ये कल की बात है सर, कल या परसों, आई डोंट नो, कल या परसों में पेशेंट आया, उसने मुझे, उसकी बड़ी टेंशन में था, वो पैल्पिटेशन, कोल्ड स्वेट्स। मैं सुना, कहता है जी मेरी शादी हुई है तो मेरी बीवी मुझे नज़दीक नहीं लगने देती। मैं कह जी क्या वजह है? जी मैं बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता हूँ, बीवी होती नहीं होती। अब बीवी मुझे कहती है तू तो फटाफट फारिग हो जाना है, सेटिस्फाई होना है, मैं फिर तड़पती रहनी है। मैं क्या, अच्छा यार, मैंने उसकी पूरी बात सुनी। तो आए कम से कम मैंने उसके अभी टेस्ट लिखे हैं, यही सेक्स, मुझे उसमें कोई प्री मैच्योर एजेकुलेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है, और वो दैट इज नॉट मैचिंग विद द वाइफ एजेकुलेशन। अब ये उसके लिए बहुत बड़ा मसला है, वो वर्ज ऑफ कोलैप्स है वो बंदा। अब जाहिर है, अब मैंने कहा उसके कहा यार मैं तुम्हारी बीवी से अगली दफ़ा लेके आना, मैं लेकिन अलहदगी में नर्स की मौजूदगी में बात करूंगा, जो मेरी नर्स है। तो जाहिर है उसको भी काउंसिल करूंगा कि फोर प्ले इज इम्पोर्टेंट, वट एवर इज इम्पोर्टेंट। द प्रॉब्लम इज देयर मे बी ए हल विदाउट मेडिसिन, आई डोंट नो येट। मगर ये मैं ऐसे शेयर कर रहा हूँ आपसे कि ये केस अभी, क्योंकि मैंने पिछले 48 घंटे में ही देखा है, तो मैं ये केसेस बहुत होते हैं। नाइदर हम कॉन्फ्रेंसों में ये डिस्कस करते हैं, नाइदर हम किसी कोर्स में ही, तो सब क्या अल्लाह भला करे कि ये ले आइए लेक्चर, वरना मतलब कभी मैंने नहीं कॉन्फ्रेंसों में ज्यादा ये चीजें डिस्कस होते देखी, लेकिन इट इज ए प्रॉब्लम। इसमें सब बात ये है कि अगर आपके लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है ना, और खास तौर पे आफ्टर द एज ऑफ 50 इयर्स, उसको व्याग्रा बन जाना चाहिए। ये बुक्स के अंदर लिखा हुआ है।
बिकॉज आपने अगर सिल्डेनाफिल या जितने भी पीटीईज लिए हैं, इसके लिए भी सेक्सुअल स्टिमुलेशन चाहिए। आपका फोर प्ले पहले बहुत अच्छा और तगड़ा होना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि बंदा हर वक्त रुस्तम बनने की कोशिश करता है, 8 बच्चे भी हो गए फिर भी कहता है मैं ही डोमिनेट करूं और मैं ही एक्टिव होकर पहले जाऊं। अगर आपका फोर प्ले पहले तगड़ा है तो ये बिलीव यू में कि आपको व्यायाम वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर फर्ज करे ले भी लिया है तो बीवी के साथ इत्मीनान दें, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट में मैंने सर सर्वेज और इंटरव्यूज किया, उनमें पैची प्रॉब्लम होती है। पैची कि बीवी के लिए नहीं है, अगर कोई गर्लफ्रेंड रखी हो या कोई बाहर है तो उनके साथ होती है। तो इनकी जो प्रॉब्लम है ज्यादा साइकोलॉजिकल और लिबिडो को होती है। तो अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं ना जी, तो फिर आपको जरूरत बहुत कम पड़ती है। और दूसरी, जैसे सर अजीज साहब ने बात कही, आप पहले आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम डिक्रीज लिबिडो की है, प्रीमैच्योर एजैकुलेशन की है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की है। तीनों ऑल टुगेदर डिफरेंट चीजें हैं और फिर एड्रेस भी उनको अलग-अलग करना होता है और उस हिसाब से फिर बंदा ठीक रहता है। एक बार कोई कॉम्प्लीमेंट होगा कि इस जैसा लेक्चर आज और इतनी जो मेहनत की है अच्छा, इसमें एक चीज थोड़ी शेयर करना चाहूंगा। जो आपने एक पॉइंट उठाया, हमारे पास एज ए फैमिली फिजिशियन क्या होता है कि वो डायबिटिक की है, हाइपरटेंशन की है और पोस्ट एंड उसको होगा पहले खराब हो जाएगा, साथ में हल्का सा जाएगा फिर तो जरूरी भी है क्योंकि क्या मतलब वो बोल रहा है कुछ हमारे फिजिशियन कुछ समझ में, लेकिन बाकी सारे नहीं समझते। आपका जो पॉइंट है ना उसको सेपरेट करें और उससे सेपरेट टाइम के इसको समझने भी कहा कि इसको डिजीज समझ के उसको बनाएं और उसका पास हो। मेरे पास बहुत अगली जब मैं प्रैक्टिस शुरू की तो एक बंदा आया, रोज क्या है दवाई लेके, तो कहे मेरे बंदा नहीं चाहिए। अच्छा, मेरे पास किसी ने नहीं वो मुझे ना इंडियन पास अच्छा तो अच्छा मैंने उसको देखा, मैंने कहा दवाई है बड़ी बच्चों को बड़ा अच्छा लगती है, लेकिन वो कीमत उसकी ज्यादा। अच्छा, एकदम वो तैयार हो गया, मैंने उसको दे दी। अब वो दूसरे तीसरे दिन उसकी बीवी मेरे पास आए, भैनो जी दर्दां वाली दवाई तुसी मेरे बंदे ने दी सी ना, ए पैसे फड़े तो दे दे। मैं यहाँ ये आपसे शेयर करता चलूँ कि पाकिस्तान एस्पिरिन फाउंडेशन, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ, आजकल मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ, एक हमारी बड़ी अच्छी बॉडी है जो एस्पिरिन पे काम करती है। तो उसमें हमने ये स्टडी की थी। वी थिंक के लो डोज एस्पिरिन इज़ अ वेरी गुड ड्रग फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन बिकॉज ऑब्वियसली प्रोस्टासाइक्लिन थ्रोम्बोक्सिन कम करती है, ब्लड फ्लो बढ़ाती है। और उसमें जो बीटा ब्लॉकर्स हैं जो इन्होंने बात की, देयर आर वेजोडाइलेटिंग बीटा ब्लॉकर्स व्हिच डू नॉट कैरी दिस साइड इफेक्ट। अदरवाइज हम उनको कहते हैं बेटा ब्लॉकर, कि बेटा ब्लॉक करते हैं, आपको बेटा होने हैं। लेकिन अब अगर आप सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर यूज करें, नॉन सेलेक्टिव, तो उनका, और इधर हम सब बैठे हैं, भाई बहनें बैठी हैं, तो हम में से 50 साल से ऊपर उम्र के कितने हैं? अच्छा, चलो अब ये बताएं कि इफ यू डोंट माइंड, नहीं पूछने लगा, जो आप कह रहे हैं वो नहीं सर, मैं ये सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि हाउ मेनी आर सेटिस्फाइड फ्रॉम देयर सेक्सुअल लाइफ। इसीलिए सर ने नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ वेरी फ्यू। मैं इससे आगे नहीं जा रहा। मैं इससे आगे, देखिए दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मैं हाईलाइट ये कर रहा हूँ कि वेरी फ्यू ऑफ अस नो whether the sexual activity of any person at the age of 50 or 60, it should be once a month, once a week or every day. ठीक है, तो डिक्लाइन है ओवर एज इज वन इम्पोर्टेंट फैक्टर। लेकिन सेक्सुअल एक्टिविटी डिफाइन करना, उसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टाइम में ये मुश्किल होगा। लेकिन मैंने इसलिए ये कहा कि जब हम ये क्वेश्चनेयर में ये चीज़ पूछेंगे, हम
जो क्वेश्चनर होगा उसमें पूछांगे कि सर यू हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर और सिंगल पार्टनर, इट विल बी कॉन्फिडेंशियल ऑब्वियसली, शायद उसका सही जवाब हमें ना मिले लेकिन हम जरूर लेंगे। और ये कि कई की 2 बीवियां भी हैं, मतलब ऐसी कोई मसला नहीं, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर का ये मतलब नहीं है कि लेकिन देखें उस औरत का तो एक ही हस्बैंड होता है ना, तो इसलिए ये हम क्वेश्चनर में पूछेंगे, फिर हम पूछेंगे आर यू सेटिस्फाइड फ्रॉम योर सेक्सुअल लाइफ और नॉट, आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस 1 से वीक है, 2 से वीक, 1 से मंथ, ये हम पूछेंगे। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि लोग अगर उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उनको प्रॉपर इंटरव्यू जो पैनल होगा जिन्होंने क्वेश्चनर भरना है उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए उन बच्चों की, तो और उनमें लड़के लड़कियां दोनों होनी चाहिए मेरा ख्याल है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि क्वेश्चनर में ये चीज़ें पूछी जाएं और फिर उसमें से एविडेंस बेस्ड हमें अपना डाटा मिले और उसमें से देखें कि हम एक सब ग्रुप बनाएं, इतने डायबिटिक्स थे, उन डायबिटिक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आई कि नॉन डायबिटिक्स में एट दैट एज ग्रुप, ये वेरिएबल्स देखेंगे। सर प्रोफेसर सईद अख्तर साहब से ये कहूँगा कि वो नेचुरल थेरेपी अगर इनके पास है, नेचुरल खुराक के जरिए, वो जरा प्लीज जरा एलैबोरेट करें। नहीं, नेचुरल से पहले मैं ये बता दूं, इन्होंने अपना चूरन बेच लेना जी, ये सारे ने उत्थे भजना है नहीं, सारे बेशमूल मेरे। अच्छा, इसमें ऐसे है जी, मतलब इसकी मैं बात कर लूं और कि अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन बिफोर 50 इयर्स है ना जी, दिस इज वन ऑफ द मार्कर ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस एंड प्रीमेच्योर डेथ, तो उस पेशेंट का थॉरोली जो है ना कार्डियोवैस्कुलर असेसमेंट होनी चाहिए, नंबर 1। अमंग ऑल एंटी हाइपरटेंसिव, ऑलमोस्ट सारी एंटी हाइपरटेंसिव जो है ना ये करती हैं आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लेकिन एआरबीज के मुतालिक कहा जाता है कि वो थोड़े से स्पेयर्ड हैं और वो बेहतर हैं जो कि नहीं करते। वेरी राइट, तो इसमें ये जरा थोड़ा सा ख्याल रख लें और तखसीस कर लें। इतना आखिर में बता दें फिर हम ख़त्म करते हैं कि कितने लोग हैं जो यूज़ करते हैं PDE5 इनहिबिटर्स, मसलन सिलिंडाफिल, टेंडेंडाफिल, कितने यूज़ करते हैं? मैं तो बहुत करता हूँ, अपने आप में नहीं, मरीजों में। सर मैं नहीं यूज़ करनी बेंगे पल बना लो, नहीं, मैं सिर्फ मतलब देर आर एटलीस्ट 10% जो नहीं, वो सेपरेट नहीं, मेरे पास नंबर हैं कि वो वलैती भी मिलती है, सारी मिलती है उन मरीज, देखें लीगली यू कांट, मैं सिर्फ उसको नंबर देता हूँ, उधर सैलस भी उसके पास है, उसके पास वैगरा भी है, वो नंबर्स हैं, वो नंबर वो करते हैं, मेरा नाम बताते हैं, उनको मिल जाती है घर पे ही। अच्छा वो खैर मैं आई कैन शेयर दोज नंबर्स विद यू, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरी सिर्फ एक गुजारिश है, मैंने कम से कम 2 मोडेलिटीज़ देखी हैं जब वो नाइट्रेट्स के साथ यूज़ होती हैं, तो क्योंकि हमारे जनरल प्रैक्टिस के भाई बैठे हैं, अगर आप वो यूज़ करते हैं उसका कोई इशू नहीं है उसको यूज़ करना, और उसको आप इंटेंडेड सेक्सुअल एक्टिविटी से ऑप्टिमम टाइम है उसको यूज़ करने का अबाउट 1 hour to 3 hours, ठीक है? तो ये आपने गाइड करना है, वो रेगुलर लेने वाली दवाई नहीं है, यू कैन टेक इट व्हेन यू इंटेंड टू हैव सेक्सुअल एक्टिविटी। और उसमें फिर अगर मैं कहूँगा कि अगर वो बंदा नाइट्रेट्स ले रहा है तो वो नहीं यूज़ करें प्लीज़, क्योंकि ही कुड कोलैप्स, और मैंने 2 कोलैप्सेस देखे हैं, इसलिए ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो ना यूज़ की जाए अगर नाइट्रेट्स आप ले रहे हैं, और अगर कोई नाइट्रेट्स ले रहा है और वो, बिकॉज नाइट्रेट्स का एक ये बहुत इशू है कि जो लिखा गया सस्टैग या कोई, वो सारी उम्र ही लिखा गया, ऐसी कोई मसला नहीं, इट लूजेज इट्स इफेक्ट, दे शुड बी ओनली यूज फॉर एक्यूट फेज एंड गेट इट ऑफ। तो आप नाइट्रेट्स बंद करके उसको कहें हफ्ते 15 दिन बाद वो ले सकेगा, ठीक है? सो नाइट्रेट्स के साथ इसका इंटरेक्शन। सर एक्सक्यूज मी जी देखिए, जो वयाग्रा है, जो सिलिंडेलाफिल है, ये पूरी दुनिया में OTC बन चुकी हुई है। आप इंग्लैंड में, जर्मनी में किसी बूट्स पे या फार्मेसी पे जाएं, आपको कुछ ज़रूरत नहीं है नुस्खे की, आप खरीदें कोई। मैं एक मिनट, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं सिर्फ बताने लगा हूँ कि ये इतनी कॉमनली यूज्ड दवाई है कि मरीज नहीं, वैसे ये कोई मरीज होना ज़रूरी नहीं है। इफ़ यू नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम योर सेक्सुअल लाइफ तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम वहाँ भी प्रिस्क्रिप्शन के साथ है, तो 50 की 2 भी खा लेते हैं लोग, उसमें कोई इशू नहीं है। तो कितनी देर की आपने कहा लेनी है? 1 हफ्ता पहले मैंने बताया आपको, क्योंकि लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स भी है ना।
सर एक्सक्यूज एंजाइना में मैं वही तो कह रहा हूँ कि एंजाइना में तो नाइट्रेट्स है ना, वो आप जब कुछ देर ले लेते हैं ना तो लूज देयर इफेक्ट, ड्रग टॉलरेंस है, इसलिए उसको हमेशा के लिए नहीं दें, प्लीज सबलिंगुअल दें। सबलिंगुअल अगर उसने नहीं ली 2-4 दिन तो आप सिलिडेंटाफिल वगैरह दे सकते हैं। तो इसलिए नाइट्रेट्स वैसे भी क्रॉनिक दवाई ना यूज करें, बिकॉज उसका असर ही खत्म हो चुका है। फिर ब्रेक दें, फिर अगर कभी इंजाइना होता है तो फिर दे दें हफ्ता 10 दिन, फिर हम तो एक दफा दे के उनको कहते हैं ले ही जाओ। सर एक्सक्यूज मी सर, ये जितनी डिस्कशन हुई है उसमें एक सवाल बड़ा ज़हन में आया है, क्या ये मुमकिन है कि जनरल पॉपुलेशन के लिए, स्पेशली यंग के लिए, हम नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ सेक्स पे कोई लेक्चर जो उर्दू में हो वो हम तैयार कर सकें? उस बंदे दी पहले इंश्योरेंस करा लेना जिन्हें लेक्चर देना जनरल पब्लिक लिए, बिकॉज अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में, हम तो डॉक्टर्स बहन भाई बैठे हैं इसलिए कि फैमिली के तौर पे ये बात कर रहे हैं। ये बात मेरा ख्याल है पब्लिकली करने के लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। मेरा ख्याल है कि ताहिर चौधरी साहब बैठे थे, इधर चले गए हैं शायद, वो ही कर लेंगे कि ले तक फिर ठीक है। नहीं नहीं, वो ये जरा मुश्किल टॉपिक है, इसलिए कि वेयर डू यू ड्रॉ ए लाइन, यू नो, इन चीज़ों में कोई लाइन नहीं ड्रॉ। ऐसे ही खाम खा मीडिया वालों को तो ऐसी खबरें चाहिए। अच्छा, नाइट्रेट्स के अलावा सिमेंटिडीन हो गई और रिथ्रोमाइसिन, इनके साथ भी बिकॉज जब रिजम्पशन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी होती है ना, तो उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया अलोंग विद द एंजाइना, इसके चांसेस बड़े बढ़ जाते हैं, और खास तौर पे अगर ये दवाइयाँ ली हुई हो तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम और हो जाती है। बाकी जितनी भी दवाइयाँ ना, सिल्डेनाफिल हो गई और या अवेनाफिल हो गई या लिविट्रा हो गई, ये सारी जो है वो एसओएस बेस पे यूज करते हैं। लेकिन टेडलाफिल के मतलब बात ऐसी है कि जिसको आप लो डोज में रेगुलर जो है ना उसको लिया जा सकता है, और वो आपकी ओवरऑल जो है ना एक्टिविटी को बेहतर रखती है। अच्छा, यूहिम भी वो तकरीबन सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज यूज कर रही हैं, मुख्तलिफ नामों से, वाइटेक, फ्लानीटेक, अजीब अजीब नाम रखे हुए हैं उन्होंने। यूहिम्बीन इज रीजनेबली सेफ ड्रग, मगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कोई इतना अच्छा नहीं है उसके साथ। आई हैव सीन प्लेसिबो इफेक्ट। वो तो इस बीमारी में प्लेसिबो इफेक्ट सब ही हो जाता है। जिन्नी कोई खूबसूरत जी गोली, लंबी गोली, मुश्किल नाल मिलने वाली गोली जिन्नी महंगी है, मरीज बड़ा खुश है इसलिए। लेकिन यूहिम्बीन स्टिल ए गुड लोकल ऑल्टरनेटिव जो पाकिस्तान में फ्रीली अवेलेबल है। सर, मैंने जी एक सेंटेंस बोला था आज से कोई 15 साल 20 साल पहले, द होल वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड सेक्स। आज मैं दूसरी दफा बोल रहा हूँ। उस वक्त अलहमरा में हॉल में कम से कम कोई मेरा ख्याल है 1500-2000 बंदा वहाँ पे मौजूद था, खचाखच भरा हुआ था। और वो सारे बाद में ये हुआ, इस तरह मुझे महसूस हो रहा था शायद ये मुझे कत्ल कर देंगे। प्रॉब्लम सर ये है कि मैं हर बंदे से ये एक ही बात करता हूँ कि वी डू टॉक अबाउट आईज, वी डू टॉक अबाउट ईयर्स, वी डू टॉक अबाउट नोज, दिल, सारे हम बात करते हैं। तो ये भी हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है, नॉर्मल ऑर्गन है, ना सिर्फ नॉर्मल है बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। जो मैंने अभी सेंटेंस बोला कि द होल वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड सेक्स, अल्लाह करीम ने आदम के लिए हवा को बनाया। हर जो जानवर है जानदार है, मेल है उसमें फीमेल बनाई, मेल फीमेल बनाई तो सेक्स साथ शामिल हो गई। बीज भी तब बनता है जब फर्टिलाइजेशन होती है। हमारे हशरफुल मखलूकात होने के नाते इंसान को अल्लाह ने सेक्स की 2 इस्तेमाल बताए। जानवरों को तो सिर्फ एक ही है ना, रिप्रोडक्शन, उन्होंने अपनी नस्ल बढ़ानी है। हमें नस्ल भी बढ़ानी है प्लस इंजॉयमेंट के तौर पे भी इसको इस्तेमाल करना है। इसीलिए इंसान डेली सेक्स कर सकता है, दिन में 2 दफा कर सकता है, 3 दफा कर सकता है। शेर अगर 1 दफा सेक्स करता है तो 6 दिन 7 दिन सोया रहता है, उठ नहीं सकता। कुत्ता सेक्स सर नहीं, वो शेर कागजी नहीं होगा सर, असली शेर सर कुत्ता भी सेक्स करता है। जब आप जो है ना वो ये लोग स्टडिंग करवाते हैं तो उसको 3 दिन बाद उसके पैसे लेते हैं, कहते हैं हमारा कुत्ता कमजोर हो जाएगा, 3-4 दिन उसके बाद उसको खिलाना पिलाना पड़ेगा। इंसान को अल्लाह ताला ने वाहिद एक मखलूक बनाया है कि जो डेली 1 दफा 2 दफा 3 दफा या इससे ज्यादा दफा भी सेक्स करना चाहे तो कर सकता है। अगली बात आ जाती है, प्रोफेसर साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा लेक्चर दिया। जाहिर है मेरे भी उस्ताद हैं, इनके सामने बोलने की औकात तो मेरी नहीं है,
लेकिन इसमें एक चीज और आ गई थी कि इसकी जो मैकेनिज्म जब हम डिस्कस कर रहे थे, डॉक्टर साहब ने, फैसल साहब ने डिस्कस किया, तो उसमें एक एंड में एक चीज आ जाती है जिसमें जो था सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जब उसमें एक्टिव हुआ, उसमें मसल्स हमारे रिलैक्स हुए, उसके बाद ब्लड जो है ना वो फ्लश इन हुआ, उसके बाद एंड में जाके अब वीनस जो है ना वो ब्लॉकेज हो गई, वेन्स हमारी कोलैप्स करती है, वेन्स कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं ताकि जो है ना ब्लड वापस ना जा सके। और उसके बाद अगला स्टेप जो आ जाता है वो आता है हमारे पेल्विक मसल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सर बल्बो पिनाइल और स्कीमो पिनाइल मसल्स जो है ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल उसमें वो प्ले करते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मोर जो है ना अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज फ्लश्ड इनटू द कैवर्नस वेन्स एंड दैट इज रिस्टोर्ड। यहाँ ये बात आ जाती है कि जो लोग अभी यहाँ पे डिस्कस हुआ है, सब ने किया है कि भी प्री मैच्योर इजैकुलेशन, ये मसल्स हमारे जो है बाद में जब हमारी तोंद बड़ी हो जाती है शादी के बाद, तो ये तकरीबन हर दूसरे तीसरे बंदे को ये मसला पेश हो जाता है, कहता शुरू से बड़ा टाइम लगता सी, हुन नहीं लगता। उस वक्त उसकी तोंद बड़ी हो जाती है, पेल्विक मसल्स जो हैं वो सारे लैक्स हो जाते हैं। उसमें हम एक्सरसाइज नहीं करते। एक्सरसाइज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट क्योर। उसके लिए हमें पेशेंट को, अपने बंदे को, पेशेंट तो वो हम बना देते हैं ना, पेशेंट तो वो नहीं होता, बहरहाल उसकी एक नॉर्मल एक्टिविटी है जो उसमें डिस्टर्ब हो गई है, तो उसको हम अगर थोड़ा सा जो है ना रीएम्फसाइज करें, उसको समझाएं कि भी ये चीज तुम्हारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ जब वो अपनी लाइफ को अब कंट्रोल करता है, अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, तो उसके ये सारा कुछ वापस आ सकता है। अभी एक और बात हुई, डॉक्टर साहब ने भी, प्रोफेसर अजीज साहब ने भी उसमें जो है ना वो एड ऑन किया था, फोर प्ले में डॉक्टर साहब ने भी हमारे स्टेप्स बताए कि जी जो सबसे पहले अराउजल होगा और उसके बाद थर्ड नंबर पे टोमिसेंस आएगा। सर समटाइम्स टोमिसेंस सबसे पहले आ जाता है। जब आप फोर प्ले की हम बात करते हैं कि जब हमारा मेल फीमेल पार्टनर्स जो है वो आपस में उनकी इतना कॉन्फिडेंस हो, और वो शादी के बाद 30 साल बाद 40 साल बाद उनकी इतनी फ्रैंकनेस हो जाए। अगर किसी ने जो है ना वो एक सवाल पूछा था कि तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए, उसने कहा जी 40 साल। उन्होंने कहा जी आपस में तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत चंगी। उन्होंने कहा हैव यू हर्ड द थॉट्स, एक दूसरे पद कभी सुने ने, व्हाट आर यू टॉकिंग, देन देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग। जब आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आपस में आप इस हद तक पहुंच जाते हैं, तो देन दैट इज द रियल अंडरस्टैंडिंग। तो टोमिसेंस जो है सबसे पहले उसको हाथ से स्टिमुलेशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जबकि आपका मेल पार्टनर कुछ भी नहीं कर पा रहा। और दूसरी बात, हमें इसको डिस्कस करने में किसी भी तौर पे किसी तरह रिलक्टेंट नहीं होना चाहिए। मैं अपने पेशेंट्स के साथ सर उनके बिल्कुल लेवल पे पहुंच के बात करता हूं। अगर एक बंदा अनपढ़ है तो मैं उसके साथ बिल्कुल उसकी आम जुबान में, जिसको हम लोग कहते हैं पता नहीं गाला काट देते हैं, उस सेंस में मैं उसे उस लैंग्वेज में बात करूंगा ताकि उसको समझ भी आए और वो मेरी बात को समझ सके, जवाब दे सके। तो हमें उसको उसके मुताबिक डिस्कस करना, फिर उसको परसुएट करना, दैट इज उसकी साइकोजेनिक साइकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट हम उसको देंगे वो इसके बगैर हो ही नहीं सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। मियां साहब को मैंने व्हाट्सएप किया नंबर अमेरिका का, और ईमेल भी है उसकी। मेरा मशवरा इनको ये होगा, ये डॉक्टर इरम शाह है, इसने पीएचडी की हुई है कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, और वो पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरेपिस्ट है, खाली स्पेशलिटी, और मेल पेल्विक फ्लोर जो आपने बात की है। क्योंकि पेल्विक फ्लोर मसल्स ऐसे मसल्स हैं कि वो हम बहुत कम यूज़ करते हैं नॉर्मल डेली एक्टिविटी, ठीक है, वो यूज़ नहीं होते हमारे क्वाड्स वगैरह, हैमस्ट्रिंग, और हमारे 60 ईयर्स के बाद वो पेल्विक फ्लोर बहुत ज़्यादा होते हैं। और एक जो वजह अभी बताई बहुत अच्छी ये था, उसको बिल्डअप करता हूँ कि हमें अपनी मुझे और आपको, और उसको इधर मैंने फिजिकली बुलाया था, टिकट बेच के वो आई थी, एक्सीलेंट जॉब, उसने 3 हफ्ते का कोर्स कराया था पेल्विक फ्लोर का, मोर मेल का कराया था लेकिन। तो मेरा मशवरा ये होगा कि, एंड शी इज़ एक्सीलेंट गर्ल, मेरी शागिर्द है, यहीं से ग्रेजुएट किया हुआ है उसने, मैंने उसको पढ़ाया हुआ है, बहुत इज्जत करती है। आप उसको व्हाट्सएप पे फ़ोन करेंगे,
एक सेशन अरेंज करें पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज फॉर मेल्स, अगर बाद में ज़रूरत होगी फिर फीमेल की अलग कर दें, और आई थिंक यू शुड टॉक टू हर ऑल्सो। वो आपको ऑनलाइन पूरी 1 घंटे की क्लास कराएगी, बेशक उसको इस कोर्स का हिस्सा बना लें, उसको अलहदा कर लें, ऑनलाइन वो उधर से करेगी, उसके पास गोरे हैं जो जिनको वो करा रही होगी, इधर हम कर रहे होंगे, फिजिक प्रैक्टिकली करा रही होगी, दैट विल बी ए वंडरफुल एक्टिविटी टू डू। तो ये मेरा ख्याल है करा लें। बहुत शुक्रिया सबका और थैंक यू सो मच के वंडरफुल डिस्कशन। बहुत शुक्रिया सबका। डरते हैं ना, वो हम लोग भी डरते हैं, खौफजदा होते हैं। मैंने वो जवानी मेरे पास आया, उन्होंने कहा जी ये है कि क्या मैं दसों का केड़े लफ्ज इस्तेमाल कर रहा, मैं अपना मैसेज देने कर रहा हूं, सोची पे गए और मैं कहते ठीक है सर। आप देखिए इस्लाम जो है ना वो हमें मौलवी साहब जो है ना, अगर हम सेक्स एजुकेशन नहीं ना करेंगे मोहल्ले में जो करेगा वो बहुत गलत है। इस्लाम हमें सिखाता है सेक्स एजुकेशन, नहीं, ना बाप बेटे को करता है, ना माँ बेटी को करती है। यही तो प्रॉब्लम है सर। यहाँ पे हम लोग शर्म महसूस करते हैं ना, आपको पता नहीं क्या चीज। हालांकि नहीं कोई शर्म नहीं करती। जी जी बिल्कुल। हम कौन सा कह रहे हैं कि जाके किसी और से करो, हम करें बेगम से वो गलत सारा कुछ कर रहे हैं, सारे बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मोबाइल भी दिखा हुआ आठ से 10 दैट इज द नॉर्मल प्रोसेस। नॉर्मल का टाइम है वो 1 से 1.5 घंटे। वो टाइम गिना जाता है कि आपने इंट्रोड्यूस किया अंदर वार्डन तो बाद इनके कोर्स के बाद कितना टाइम लगता है? 8 to 10 जट अगर 8 to 10 जट लग रहे हैं पेशेंट इज नॉर्मल, नो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। फूड प्ले थोड़ा ज्यादा इसमें साउंड का फूड प्ले एक रेंज की टर्म है, लेकिन ओनली चुनिया लगो कितनियां पाओ बहुत नहीं भी पैर नहीं कुछ लंबे हुआ तो मेरा से काम नहीं कहीं पे गले ये भी और ट्रेड में ज्यादा सो मोस्ट